Good afternoon. This is Raju Prityani reporting you from Somaya Cricket Ground. The second match is about to start between DHANERA and DVO. DHANERA won the toss and have decided to bat first. To remind you, it's a 20-over match, the BANAS Cup, now to be played between DHANERA and DVO. Match about to start. Bright sunshine, bright sunny day, and beautiful ground, beautiful strip. The outfield is fast. So the match to start in few minutes. Both the teams are on the field waiting for the umpire to come. Bright sunny day, absolute glorious sunshine. The breeze is blowing. And we do expect an exciting match to be a close contest between these two sides, DHANERA and DVO. Now there's a warm up. DVO players, the one in the red, having a warm up. So umpires are walking on the field. To remind you, DHANERA won the toss and have decided to bat first. DVO are warming up. Both the umpires walking slow towards the wicket.
DVO batting lineup is Josh, the wicketkeeper, Anish, Dev, Priyul, Pasam Pratik, Arbit, Morkia, Jamesh, Sahil, Devansh, Jainam, Mehul, Nishan, and Darshit. That is Dhanera's team batting first. वो धनेरा बैटिंग करेगा पहला DVO. Now the DVO lineup is Vatsal, Dhruv Mehta, Nishil, Naitik, Manav wicketkeeper, Arya, Rishil, Ritik, Suken, Aryan, Darshan, Sayyam, Jainam, Raj, Devansh, Rushabh, Romil and Sulabh. So match to start. Players are down the track, on the field. So Dhaneras will bat. The batsmen are out on the track. Dhanera blue. The blue team is out on the field. DVO, the men in red. Dhanera's batsman, the opening batsman is wearing number 18 t-shirt, which reminds me of Virat Kohli with the helmet on. So here they go on the field, the opening batsman of Dhanera. Bright sunshine, absolute wonderful stadium, Somaya cricket ground, beautiful strip. The outfield is fast. And we expect a close match between these two sides. So Mehul is on the strike. Play about to resume. First ODI ball by DVO. Now you can find the slip over there. There's a flare at point. Deep third man. Player at covers. Mid off. There's mid on. Square leg. And a player at deep fine leg. Here we start the proceedings. The first ball of the innings. Dhanera messes out the first ball. Good bowling. Sulabh has bowled indeed an excellent line and length. The first ball, a dot ball swing. There's a seam for the bowler. It's helping the bowlers. It can be understood it's the first ball. The ball is new, so you will find some pace and seam on the ball. Now Mehul is lifted, bowler's back. Is rushing towards the boundary, it will reach the fence. Yes, it goes for the fence. What a shot by Mehul. Down the track, 4 runs. Reminds me of Virendra Sehwag when he used to bat.
He never used to see whether it's the first ball or the 10th ball. He used to go for the shot whenever he used to get a chance. So Mehul off to a good start, heading a winning shot. Not a winning shot, I mean to say the 4 runs for the second ball of the innings. So extras, they opened the account with extras. Mehul is off to a good start. The men in blue are batting on 5 without losing a wicket. First over in progress. Men in red. Square catch. It goes towards the boundary section. There's a player at covers, deep covers, and they come back for the second run. What a start given by DHANERA. DVO on the back foot in the first over itself. All the runs coming from Mehul's bat. Missed out. There's an appeal, half-hearted, and umpire is unmoved. Good comeback by Swalap after a boundary and couple of runs. One extra has come in this over. Bright sunshine, wonderful ground, beautiful strip, and outfield is very fast. Here is Sulab on his way. Again, beaten. Batsman is beaten. Now, something has to be done by DVO. They'll have to go for the early blows. They'll have to strike early to win the game. Couple of quick wickets and DVO can come under pressure. Or if they go off to a good start, then DVO will be under pressure. The third ball, Mehul has missed out. So it shows the volume of Sulab's bowling. So end of the first over, the score stands 7 for no loss. Off to a good start. All the 7 runs coming off Mehul's bat. One boundary and a couple scored by Mehul in this over. And confident looking straight drive down the ground, heading the side screen for 4 runs. That was the first blow from DHANERA, boundary from Mehul. And the scorecard reached 7 for no loss, second over to start. To be bowled by Sulab. Sulab on his long run up. Here he comes. To Yash. Lovely placement. Lovely placement. It bisects the player. And they come back for the second run. Good running between the wicket. So, Yash is off the mark with the couple. Nice shot. Placing between the two players. What an elegant looking shot that was. Backward push, good copybook style, confident looking shot from Josh. A score of around 160-170 by DHANERA can put DVO under pressure. Again shot towards the point section. Wonderful fielding done. Shy at the stumps at non-strikers in. And back up by the fielder at long on towards the mid-on. No run given away.
Misses out. Great bowling. There are no fielders on the mid-on side. There's only a deep square leg. Not a deep square leg, you can say square leg. Long on. Places it towards the third man. The ball glides towards the third man boundary for 4 runs. What a shot this one has been. Reminds me of Brian Lara used to play that kind of shots. Roy Fredericks, David Gower. Even Clive Lloyd used to play that kind of shots. And why to forget Kumara Sangakkara and Yuvraj Singh. Kumara Sangakkara was one of the best players when he used to play this kind of shots. Nice shot from Josh. Batting on 6. Now this one goes towards well fielded by the player at covers. Could have placed the ball but didn't time the ball exactly the way he wanted to try. But it misses out. Couldn't time it well. So end of the second over. The score stands 13 for no loss. Off to a good start. Dhanera off to a good start. 13 for no loss. They are yet to lose a wicket, which is a good sign for Dhanera. Now where do DVO go from here? They need to take wickets or they'll be under pressure as the match progresses. Sulab to bowl his second over. There's a white ball. Poor line, poor bowling by Sulab. He should remember that whites and no balls could be disappointment for the bowling side. The players look dejected when there's a white ball or no ball. They lose their heart out. Shot on the cover section. Lovely shot, placing its a punch on the offside towards the cover section. Single is what they'll get. Good shot by Mehul. He's batting confidently, looks for a good score. Confident looking shot from Mehul. Lot of responsibility on his shoulder being the opening batsman. The responsibility taken by Sunil Gavaskar when he was batting for India in 70s and 80s. Now the men in blue, Josh on the strike. Sulab on his long run. What a placement this is. It's racing towards the boundary. Brilliantly fielded at covers. 1 run, that is what they'll get. The way Josh is playing, it reminds me of Saurav Ganguly. Rahul Dravid said he is the god on the offside. The way he used to place the fielders, even the 4 players on the offside, he used to hit the boundaries. That was the class of Saurav Ganguly. Now this one goes up, and that goes out of the boundary for a huge 6. The player tried his back best at long off section, but can see only the ball going out of the ground. Mehul has pulled up his socks. He has changed his gears from the first to fourth. 22 for no loss, third over in progress. Off to a great start. Great start. Dhanera 11 is off to a great start. Again, this is another blow. Again, it's boundary, I believe. Boundary on the square leg section for 4 runs. Mehul is blazing, batting very confidently.
Reminds me to some extent of Shahid Afridi when he used to bat for Pakistan. It reminds me of Shahid Afridi. Fielded at point, no run given away. I remember Shahid Afridi scoring an ODI 100 of only 35 balls. The bat was gifted by Sachin Tendulkar to him, and he went on to score his first ODI 100. What a lovely shot towards the point section. Couldn't place it. 26 for no loss after the completion of 3 overs. 26 26. Sulab on his way. His bowling reminds me of Madan Lal, the one who won the cup, 83 World Cup, by taking the wicket of the great Isaac Vivian Alexander Richards, caught by Kapil Dev. Great catch taken by Kapil Dev, standing at mid-wicket. He ran all the way towards the mid-wicket fence and took a two-handed catches, but a brilliant catches. The crowd rushed towards him. There was no fence at that time in the boundary at Lord's Cricket Ground. The catch which changed the game, and India went on to win the cup by 43 runs. There's an appeal, the appeal, half-hearted appeal turned down by the umpire. There is no DRS over here. Somaya Cricket Ground, bright and blazing sunshine. The sun has baked out. It's going down the leg side. It's rushing towards the boundary. I believe they'll come back for the second. No, says the player, the batsman and the strikers, and wise decision taken by the player. DHA yet to lose a wicket, scoring 28 runs. Current run rate is 8.40, with Mehul batting on 17 of only just 11 balls. Jash is batting on 7 with 9 balls. Suken has given away 8 runs in his 1.2 overs. Now where do DVA go from here? They'll have to go for the blows. They'll have to strike. Again down the leg side. There's a chance, or misses out. What a blunder the fielder has done. There's a wide and misses out the run out. Current run rate is 9 runs per over. Now this is going towards the third man for a single. Very good ball. Good comeback by Suken. No run given away. It was a good, nice ball. Pitched. Good line and length. No run conceded. Suken has come back. He has given away just 10 runs. This is second over in the progress. He is bowling good line and length.
but we require wickets. DVO needs wickets over here. Now this goes down the leg side. Poor bowling for the white ball. Good bowling by Sukain. Forward push by Mehul. Now Sukain has kept under control to Mehul, who was batting blazing. He was going blazing guns. Now he hasn't scored runs the way he used to score in the first 2 overs. He has scored fours and sixes, but he has kept the batsman under control. Bowled him! Bowled him! The wicket Sukain wanted, and DVO have struck. They have strike back. Now what the game is going to turn out? DVO has taken the first wicket. What a wicket by Sukain. 4 over 32 रन एक विकेट. End of 4 overs, 32 for 1. Good strike by DVO. They believe they are in the game. Still a long way to go. So DVO has taken a price wicket of Mehul, the batsman who was looking good, was playing attacking cricket and proving out to be a dangerous batsman. Now Sukain has taken the wicket. Early blow for Danir. They can be on the back foot if DVO strikes another couple of wickets. That will boost the moral of DVO team. But Danir, if they score runs, the match will turn either way. Still a long way to go, only 4 overs bowled. To remind you, it's a 20-over match. The Banas Cup played at Somaya Cricket Ground, one of the finest grounds of the country. So Kushal to bowl his first over. Lean, tall, a defensive field. There's a point. There's deep covers, long off, standing near the ropes. There is mid wicket, square leg, and deep fine leg. There's a player at point. Josh on the strike. Kushal to open his first over. To remind you, it's 32 for 1 after the completion of 4 overs. Shot, lovely shot. It's racing towards the boundary like a bullet. What a shot. This is copybook style over the covers. 4 runs. Great shot by Josh. Josh, I mean to say. Playing wonderful cricket. What Mehul missed out, Josh is recovering back. He wants to prove that I can play better than Mehul.
Glides it towards the third man. Single on the board. Bright sunshine, absolute warm, but the breeze is blowing at the back. Shot towards the cover section to the point. Steered it. Fielded brilliantly by the fielder at point. Kushal is bowling good line and length. The new batsman will take some time to come out. Sahil is the new batsman. Having a discussion with the non-striker, Josh. Forward push. Good dot ball given by Kushal. Sahil is taking his own time. Now pushes toward mid wicket and half-hearted shot. He's not playing confidently. Sahil is yet to open his account. Now the bowler is coming round the wicket. Oh, good bowling, a dot ball. He has struck Kushal on the back foot. Kushal is bowling brilliantly. Sahil is yet to open his account. Josh is batting on 12. It's 37 for 1 after the completion of 5 overs. There's a discussion between both the batsmen. Now Josh is trying to boost up the morale of Sahil, who is yet to open his account. Sahil is playing subdued innings, is yet to open his account. Here is Suken, who has taken the wicket, the only wicket to fall. There's an appeal! There's an appeal! Very hard and strong appeal. But umpire is absolutely unmoved. All the players were rushing towards the umpire. Not out, says the umpire. Was a close call. Now this one goes towards the third man. Is rushing towards the third man boundary for 4 runs, I believe. Yes, it goes for the 4. The bowler who is capable of taking wickets in this match is Suken. He missed out a leg before decision. Could have been the candidate, but the umpire had different thoughts about the LBW decision. Suken on his way. Now this is lifted over long off section and it goes for the boundary. Lovely shot cheered by the players. DVO side players cheering up. Josh, who is batting on 16. What is great start given by Dhanir. 45-1 in the 6th over. Now where do they go from here, Dhanir? Will they score around 180-190, which will be a good, respectable and winning score?
Now this one glides towards the third man. It's racing, racing, racing all the way. The players are disappointed. The player at mid-on is disappointed. And brilliant fielding done by the player at third. Third man, he slides down and saves the boundary, a certain boundary. 47 for 1. Josh is batting very confidently. Towards the long on section, they run for a quick single. Now the player to look off for the Dani's batting lineup is Josh. Good job done by Mehul, who scored almost 20 runs. Now Danir has got the responsibility. Saj is batting subduedly and is yet to open his account. Yes, the run for the single. Oh, fired back. Just he goes back and he falls down. He is desperate to take single. So after the completion of 6, it's 48 for 1. Good bowling by Sukain has given away 22 runs in his first 3 overs. But remember, it's a 20-over game. Each bowler is allowed to bowl only 4 overs, 24 legal deliveries. To remind you, there's a match between India and Afghanistan to be played at Bangalore today, tonight 7 p.m. And India are leading 2-0 in that 3 T20 match series. Now the fielding side has a discussion. They need to play a player in the right direction. Runs have been scored heavily and flourishingly. They need to score. They need to control the run rate. 8 runs per over, only 1 wicket down. And the score line is very good. 48 for 1 after the completion of 6. A score of around 180-190 can be a challenging total for DVO. It's not easy to chase the target when the team is under pressure. White ball. Now this DVO cannot afford. They cannot afford to give away white balls. So the magic figure 50 is on the cards. Glides it towards the point section. Gives respect to the bowlers. Understood that he is bowling his first over. Divansh is bowling great. Good steady line and length. Fielded by the player at the point section. Now the batting side has been restricted. They have controlled the runs in this over. Well bowled. Well bowled, Divansh. You are bowling really very well. He wanted to score. He went like a Surya Kumar Yadav style, but misses out. Now Josh is taking chances. He believes the run rate has to improve. Divansh is bowling brilliantly. Now this one has been guided towards the third man.
You're running for single. The ball is coming down towards third man. They come back for the second. The 50 is on the board. The magic 50 has been crossed. So after the completion of 7 overs, it's 51 for 1. The best part about Danir is they have got wickets in hand, and they've got 9 wickets in hand. They have crossed 50. That's a good score on this track. A beautiful strip. The outfield is fast. Now, what Danir has to do? How will they come back? Danir is batting on 51 for 1. DVO, how will they come back? Now I hand over the mic to Abhishek, who looks a very promising commentator, upcoming commentator. I hand over the mic for the next 5 hours. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एंड थैंक यू राज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यहाँ पर 51 रन पे 1 विकेट 7 ओवर। और यहाँ पर धनेरा ने काफ़ी अच्छी की है। और यहाँ पर बॉलिंग करते हुए कुशल को और एक सफलता मिलती हुई। और यहाँ पर साहिल ने बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा दिया। 7 गेंदों पे 0 रन और साहिल आउट हो गए हैं बिना कोई रन बनाए। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की इन्होंने और बहुत ही फ्लाइटेड बॉल, लालच परोसा और लालच को स्वीकार किया उन्होंने और विकेट पर जाकर डंडे को बिखेर दिया बॉल ने। यहाँ पर नए बल्लेबाज आते हुए कुशल ने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है। 5 ओवरों में 1 रन दिया है कुशल ने और 7 ओवरों का खेल हो चुका है और 7 ओवर में 51 रन आ चुके हैं। 51 रन काफ़ी एवरेज चल रहा है, ना कम ना ज़्यादा, लेकिन यहाँ से स्कोर को बढ़ाने की आवश्यकता है। 7 ओवरों 10 ओवरों के बाद इनको थोड़ा रन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। जस्ट काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन उनको अपना स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना होगा। अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की आवश्यकता है। 23 बॉलों में 25 रन और कुशल का ये तीसरा गेंद। कुशल ने अभी तक इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया है और काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग की है उन्होंने। और ये एक और फ्लाइटेड गेंद और ये पैड पे जाके टकराती हुई, लेकिन अंपायर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। काफ़ी बॉल को टर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहला बॉल हमने देखा वो विकेटों पे हिट कर दिया था और ये बॉल थोड़ा हल्का टर्न होकर बाहर की तरफ गया। काफ़ी अच्छा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदबाजी में और 3 ओवरों में अभी तक एक फ्लाइटेड गेंद और ये बैट्समैन चकमा खाते हुए। यहाँ पे बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आता आया इसे कट करूँ मैं, इसे कट करूँ या इसे ड्राइव करूँ। इस प्रकार का वो फ्लाइटेड गेंद और टर्न हो रही है जो कि बहुत अच्छा संकेत है स्पिनरों के लिए। और इस ओवर में अभी तक कुशल ने एक भी रन नहीं दिया है
और उसके साथ एक विकेट भी लिया है, तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर कह सकते हैं ये हम। एंड ये कुशल का 5वां गेंद। अनिश ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला और एक डॉट बॉल। अनिश को कोई जाके बताओ कि ये T20 क्रिकेट है, यहाँ पे बैट और बल्ले का कनेक्शन होने दो और रन के लिए जाइए। ऐसे कब 20 ओवर निकल जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। और एक यहाँ पे और ये मेडन विकेट, मेडन ओवर कुशल का काफ़ी विकेट मेडन लेते हुए कुशल बहुत ही उम्दा बॉलिंग का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए कुशल। इस प्रकार की बॉलिंग हम सिर्फ टेस्ट मैच में देखते हैं जहाँ पे डेज गेम होता है, लेकिन यहाँ पर हमने टी ट्वेंटी में मेडन डालना और विकेट मेडन डालना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि को कुशल ने प्राप्त किया है। काफ़ी बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए हम उनकी बॉलिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। और हमारे देवांश अपना ओवर लेकर आते हुए पहले ओवर में उन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी, मात्र 3 रन दिए थे। स्ट्राइक पर जस्ट को चांस लेना पड़ेगा और और यहाँ पे ये स्पिन, ये काफ़ी अच्छा बॉल को टर्न करवाया। आमतौर पर देखा गया ऑफ स्पिनरों के खिलाफ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है और काफ़ी अच्छी कप्तानी यहाँ पर देवांश काफ़ी घातक साबित होते हुए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं 25 रनों पे। और यहाँ पर जस की दूसरी गेंद को देखते हैं और यहाँ पे और एक और फ्लाइट और एक काफ़ी ज़्यादा बॉल घूम रही है। जिस प्रकार से बॉल टर्न हो रहा है देखने जैसा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पिन हमको देखने मिला है। और एक और गेंद और ये थोड़ा इन्होंने आम बॉल डाला है, अंदर की तरफ डाला और यहाँ पे 1 रन लेते हुए जश और अनीश ने स्ट्राइक लिया है। अनीश ने स्ट्राइक लिया है। कप्तान जेम और यहाँ पर जो हमारे धानेरा टीम है वो काफ़ी दिक्कतों में। और एक यहाँ पर कट करते हुए पॉइंट की तरफ और यहाँ पे 4 रनों के लिए नहीं जा रही है बॉल। फील्डर वहाँ पे आ गया है, काफ़ी अच्छा फील्डर भागकर वहाँ पर आए और अनीश ने अपना खाता खोला 5 बॉलों में 2 रन। और अनीश काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे पिछले ओवर में, लेकिन अभी उन्होंने 2 रन से अपना खाता खोला है। और यहाँ पे देवांश का अगला बॉल है, यहाँ पे एक हवा में बॉल था, एयर में काफ़ी देर तक बॉल था। यहाँ पर ये एक मौका देते हुए 55 रनों पे 2 विकेट। और देवांश का आखिरी बॉल काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है, मात्र 7 रन दिए हैं इन्होंने। अगला ओवर, माफ़ करिए आखिरी गेंद और ये फ्लाइटेड और ये काफ़ी अच्छा अपने कलाइयों से रिस्ट का यूज़ करके मिड विकेट पे 1 रन लेते हुए और स्ट्राइक रखेंगे जश अपने पास। और इसी के साथ 56 रन पे 2 विकेट। 9 ओवर, जश 27, अनिश 3
और देवांश ने 2 ओवरों में 8 रन दिया है और इस ओवर के बाद शायद ड्रिंक्स ब्रेक हो सकता है। और यहाँ पर स्पिनरों ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। स्पिनरों ने एक साइड से पकड़ के रखा हुआ है, रन आसानी से रन नहीं दे रहे हैं, उनको रन के लिए बहुत मेहनत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कुछ रनों के लिए जाएंगे बैटिंग टीम। यहाँ पे रन रेट का काफ़ी मसला हो चुका है और यहाँ पर गेंदबाज कुशल जिन्होंने लास्ट ओवर विकेट मेडन किया था और यहाँ पर काफ़ी बाहर की तरफ दिया जिससे बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका मिला, विद दे दिया, ऑप्शन के काफ़ी बाहर बॉल डाला और बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका मिला और 1 रन यहाँ पर जश के खाते में। स्ट्राइक अनीश के पास। ये देखना रोमांचित होगा कि अनीश कैसे खेलते हैं कुशल को, क्योंकि आखिरी ओवर उन्होंने 5 गेंदें डॉट की थी कुशल के खिलाफ, जिससे कुशल का ओवर मेडन हुआ था। और ये कुशल बॉल करते हुए और एक और अच्छा फ्लिक करते हुए यहाँ पे 2 रनों का कॉल दिया है, 2 रनों का बुलावा दिया है और ये मुझे लगता है 1 रन और भाग जाएंगे। इसी के साथ 3 रनों के साथ अनीश काफ़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। उनको पता है कि मैं बड़े शॉट के लिए नहीं, मैं अभी अपना टाइम लेता हूँ, मैं सिंगल्स डबल पे डिपेंड करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ आखिरी के ओवरों में मैं चांस लूँगा। कुशल यहाँ ज़रा अपने लाइन से भटके, उन्होंने आखिरी ओवर जो किया था काफ़ी पकड़ के स्टंप्स में किया था, लेकिन इस बार उन्होंने ये गेंद लेग स्टंप के बाहर कर दी, जिससे अनिश ने सिर्फ और सिर्फ बल्ले का मुंह दिखाया और 3 रन मिले। यहाँ पे अगला ओवर कुशल का और कुशल ने काफ़ी अच्छी गेंद की, जश ने काफ़ी डेलिकेट खेला, सिर्फ बॉल को टहला दिया स्लिप की दिशा में, गली की दिशा में, और वहाँ पे फील्डर तैनात नहीं था, तो इसलिए 1 रन कुशल को मिला, कुशल जश को 1 रन मिला। और यहाँ पर कुशल का ये चौथा गेंद, यहाँ पे फ्लाइटेड बॉल और यहाँ पे ये कैच, यहाँ पे कुशल ने लालच भरोसा था फ्लाइट देके और यहाँ पे काफ़ी शानदार कैच पकड़ा है। यहाँ पर क्या यहाँ पे रोमिल ने काफ़ी शानदार कैच पकड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार के T20 में इस प्रकार के कैच पकड़ेंगे तो ये मैच जीत सकते हैं। टेक कैचेस विन मैचेस, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे लालच दिया था कुशल ने, हल्की गेंद की थी और एक सीधा उनके हाथों में, सीधा नहीं बोल सकते, लेकिन कुशल ने बहुत ही अच्छा कैच को जज किया और कच को लपक लिया। बहुत ही शानदार बॉलिंग और यहाँ पर एक और विकेट का पतन होते हुए और अनीश यहाँ पर आउट हो चुके हैं। और कुशल ने 10 ओवर में 2 विकेट दिया है और उनका तीसरा ओवर चल रहा है। 2 ओवर 4 गेंदें उन्होंने फेंकी और इस ओवर में उन्होंने 3 रन दिया है और 1 विकेट लिया है। काफ़ी ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कुशल द्वारा। और यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक, मिलते हैं कुछ क्षणों के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों। और यहाँ पर स्कोर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 61 पे 3, 9 ओवर 4 बॉल। और कुशल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। उन उनके 2 बॉल और बाकी है इस ओवर के। उम्मीद करते हैं ये 2 बॉलों को अच्छा फिनिश करेंगे और अपने टीम के लिए एक और सफलता निकालेंगे। स्ट्राइक पे आए हैं जिमीज, हम उनको जिमी बोलेंगे, जिम बोलेंगे, जिम। और जेमेस को भी यहाँ पे जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। उनकी टीम काफ़ी मुसीबत में है अभी। इन परिस्थितियों में उनको जश का साथ दे के एक साझेदारी करना होगा 15 ओवर तक। फिर उसके बाद वो थोड़ा चांस ले सकते हैं। अनिश काफ़ी जूझ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। कुशल उनको रन नहीं दे रहे थे। और एक और बढ़िया गेंद और एक पॉइंट के हाथ में काफ़ी अच्छा स्टॉप किया है पॉइंट के फील्डर ने, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए। और यहाँ पे एक रन लेके जश के पास स्ट्राइक आया। पहले ही गेंद पे खाता खोला है और 62 रन यहाँ पे हुए। 62 ओवर 3 विकेट। और फ्लाइटेड गेंद। और जस्ट काफ़ी समझदारी दिखा रहे हैं। उनको पता है परिस्थितियों में हमको साझेदारी की, हमारे टीम को, उनकी टीम को साझेदारी की ज़रूरत है। और काफ़ी मेच्योर इनिंग खेलते हुए उनकी ज़रूरत 20 ओवरों तक रहेगी, क्योंकि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है। तो जश और जिमीज़ का साझेदारी होना बहुत ही ज़रूरी है इस इनिंग में। कुशल का ओवर समाप्त होते हुए 12 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं और उनका 3 ओवर हो चुका है। यहाँ पर 63 रन 3 विकेट 10 ओवर। अगला ओवर लेकर आते हुए अगला ओवर वत्सल लेकर आते हुए। और वत्सल मीडियम पेस बॉलर। और स्ट्राइक पर जस यहाँ पर फील्ड को खोल कर रखा है, फैला कर रखा है। फील्डिंग टीम को पता है कि हमको सिंगल्स और एक रन से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो उन्होंने अपने फील्डरों को फोल्ड कर रखा हुआ है ताकि 6 और 4 बच सके। बाउंड्री लाइन पर एक डीप डीप मिड विकेट रखा है जश के लिए। वत्सल ने डीप मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग रखा है। तो काफ़ी अच्छा फील्ड सेटअप किया है यहाँ पर वत्सल ने अपने बॉलिंग के हिसाब से। और यहाँ पर पहली गेंद आते हुए और काफ़ी अच्छी पेस के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। स्पिनर्स के बाद वत्सल पेस का आना बैट्समैन पर फ़र्क डालता है, क्योंकि स्पिनर खेलने के बाद तुरंत पेस बॉलर को आई सेट इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जश ने अभी 31 गेंदें खेली है, तो उनको बॉल फुटबॉल जैसा दिखता होगा, तो उनको चांस लेने की आवश्यकता है अब यहाँ पर। और यहाँ पर वत्सल अपना अगला बॉल लेकर आते हुए और ये काफ़ी अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन हवे में गेंद। यहाँ पर बैट्समैन का जान हलक में आते हुए, वहाँ पर फील्डर तैनात नहीं था। वहाँ पर अगर फील्डर तैनात होता तो जश को वापस पवेलियन लौट कर आना पड़ता। और यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और
64 रन 3 विकेट 10 ओवर। तो बोले यहाँ से किसी एक प्लेयर को चांस लेने की आवश्यकता है। और यहाँ पर वत्सल का तीसरा गेंद अपने फील्ड को सेट करते हुए, अपना टाइम लेते हुए, और स्ट्राइक पर जिमीज। देखते हैं जिमीज कैसा अप्रोच दिखाता है, और यहाँ पे कट करने की कोशिश, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद कीपर की हाथों में। ऐसे गेंद को सिर्फ टाइम करना होता है। जिमीज बहुत ज़ोर से हार्ड हिट करने गए। अगर सिर्फ हल्के हाथों से भी बॉल और बैट का कनेक्शन होता तो शायद ये बॉल निकल जाती, लेकिन यहाँ पर वत्सल काफ़ी अच्छा अप्रोच और काफ़ी अच्छा बैट्समैन का माइंड रीड करके बॉलिंग कर रहे हैं, अपने फील्ड को अच्छे से सेट करके टाइम लेके। और एक और बढ़िया गेंद, और जेमिस को बोलना पड़ेगा ये टेस्ट मैच नहीं, ये T20 है, यहाँ पे रन्स की आवश्यकता है। और वत्सल काफ़ी समझदारी के साथ उन्होंने जिमिस को रीड कर लिया है कि ऑफ स्टंप की गेंद पर वो मुसीबत में आ रहे हैं। और आ, और यहाँ पे अंपायर वाइट कॉल। जिमिस जस वो ये वाला वन स्ट्राइक पता है। क्या वो उस पे जो दिखा रहा है इसके ऊपर वो होता है हो जाएगा वो टाइप वही और यहाँ पे एक रन प्राप्त करते हुए, मुफ्त के एक रन प्राप्त करते हुए, और यहाँ पे 65 रन 3 विकेट 10 ओवर 4 ओवर। वत्सल ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, काफ़ी कंट्रोल के साथ की है, लेकिन एकमात्र उन्होंने एक्स्ट्रा रन दिया है ऑफ साइड में। और एक और गेंद करते हुए, और ये भी काफ़ी ऑप्शन के बाहर, अंपायर का वाइट कॉल। इस प्रकार की गेंदों का हम उम्मीद नहीं रखते हैं वत्सल से। वत्सल हमारे स्ट्राइक गेंदबाज है, और स्टंप्स में कर सकते हैं जिमिस को बॉलिंग। स्टंप टू स्टंप करना है उनको। और यहाँ पर एक आक्रामक भरा शॉट, एक आक्रामक भरा प्रहार, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट करना होगा। जज के पास स्ट्राइक आया है, और जज को यहाँ पे थोड़ा हर ओवर में एक बाउंड्री की आवश्यकता है, तभी टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकता है। और वत्सल अपना टाइम लेते हुए जस्ट स्ट्राइक पर, और यहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी बैक ऑफ द लेंथ उन्होंने डाला है, और बैक ऑफ द लेंथ में डिफेंस। और यहाँ पे हमारे राज सर आते हुए हमको ज्वाइन करते हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री में। शुक्रिया अमरजीत, ज़बरदस्त कमेंट्री दे रहे हैं आप। अभिषेक ने अच्छी कमेंट्री दी है, इम्प्रूव कर रहे हैं, तजुर्बा ले रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, the score stands 67 for 3 after the completion of 11 overs. Thanir now under control, good bowling done by DVO. They've strike back,
3 wickets down. Dhanera were off to a good start from Mehul and Yash, but they are bogged down now. They are under pressure. They need to score at least 150 on the board to be back in the game. Now DVO has strike back and they are doing a wonderful job. Sukain to bowl. His fourth over, he's taken 1 wicket for 22 runs. If Dhanera is restricted to 120, DVO will be the favourite to win the game. But again, it's a game of glorious uncertainties. You cannot predict anything till the ball of the game is bowled. For now, it's DHA batting on 67 for 3. Shot towards the cover. It's placed, bisected towards the third man covers. It's racing towards the boundary. They're coming back for the second. It goes. Goes all the way. Lovely shot for 4 runs. What a splendid start given. It's placed between point and covers for 4 runs. Josh is batting on 31. There's an appeal, half-hearted, turned down by the umpire. "71 for 3. Shot it towards the mid-wicket. Fumble by the fielder. They're coming back for the second run. So they have scored runs in this over. They have scored runs. Dhanera have scored runs in this over. And this is the way they'll have to bat. They'll have to score at least 8-10 runs per over if they want to bounce back in the game. Remember, it's a 20-over match. Josh has got a huge responsibility. He's batting confidently on 31 of just 33 balls. Forward push and they're rushing for the single. Well taken. The ball up. Fielder plays that covers. Fields it well. Good single by Josh. Sukain has taken 1 wicket. That was of Mehul. Clean bowled him up. Now Jamesh is batting on 9. He needs to score runs. Left-hand batsman looks elegant. Now this goes towards the backward. What a lovely shot. Racing towards the boundary, the wicket keeper. The standing is just admiring the shot. Last ball of Sukain coming up. He has bowled reasonably well, just given away 31 runs. The bowlers are supposed to bowl only 4 overs. Each player has to bowl just 4 overs. It's a 20-over match. Glides shots toward the covers. There's a misfield. The ball is racing towards the boundary. 1 run completed. Now it's 77 for 3 after the completion of 12 overs. Now, what the Dhanera side has to do. They scored almost 10 runs in this over. 10 overs more, 10 runs more in this over, 80 in another 8. The score will be 160 odd runs, which will be a challenging score for DVO to take that target. It will be a challenging score. Dhanera have got the wicket, 7 wickets in hand, and Josh is batting brilliantly on 34. The number 6 batsman is warming up. There's a discussion. Men in red, they are having a discussion.
They gave away runs. The last over was expensive. Russell to bowl his second over. He has just given away 4 runs. Josh, the left-hand batsman, reminds me of Kumar Sangakkar and Brian Lara, batting on 34. Vatsal on his way. Down the leg side, white being declared. Poor bowling by Vatsal. You cannot afford to bowl wide at this point. You have to defend. You will be having a challenging task when you come out to bat. Restrict them to 120 DVO. Then you can have a match out of it. Goes over the mid wicket towards the fine leg. I mean to say behind the wicket keeper. It races toward the boundary, towards the screen. 4 runs on the board. Lovely shot. Normally hit by Asif Iqbal, the great of Pakistan, and Surya Kumar Yadav, the current batsman of Indian team. They are very good players playing this kind of shot. There's an appeal. Yes, the batsman walks away without seeing the umpire. Has bowled him. He has bowled him. So huge wicket for DVO. Josh is out. The subtle batsman is out. And what a wicket to go. A prize wicket of Josh. Manil Stam goes 82 for 4. Nice knock played by Josh, scored 38 runs. Pressing a good revision from the players back towards the pavilion. Just to remind you, the batsmen have to reach within 20 seconds. Remember the incident in the World Cup? Angelo Matthews had to go back. The match was disturbed by the Sri Lankan players and the Bangladeshi players. They didn't shook the hands when the match was over. So don't do the blunder. You have to be there within 20 seconds. So the batsman to walk in is Pratik. Jamesh is stuck up on 9. Vatsal has taken the first wicket of his bowling. Vatsal on his way. Wicket keeper is setting up his field. There's an interruption. Goes back. No slip. There's no third man is standing. There's a deep point. Covers. There's an appeal. Lovely ball.
The bowler is disappointed. Where did the ball go? He's disappointed. So 6 runs per over will be 128. If they score 8, it will be 144. Bright sunshine, beautiful strip, and the outfield is very fast. Runs to be scored, which are not scored in recent past. Heads back towards the mid wicket. The mid wicket comes rushing towards the covers, towards the mid on, I mean to say. Single given away. Shaw missed out. Just over the fielder above the point set and goes for the boundary. The catch could have been the catch of the match, could have been the catch of the tournament, but missed out. Just above the head of the player at point section. Misjudged the ball. Anticipated well, but it went like a boomerang over the top. Danil is inching towards century mark. Chemish is batting confidently on 13. The unlucky number for the Indians. And 87 is the unlucky number for the Australians. Will they cross the 8-13 run? Chemish is batting on 13. A legal delivery. Now what's that? It's a no ball, I believe. So no ball given. So now it's a free hit, an advantage for the batting side. I believe it crossed the popping crease. Now you cannot change the field when the batsman change the strike. So it's going to be the same fielding section. You cannot change the players. Is Vatsal. No ball. Struck. The ball goes up, up, up. It goes. It's racing towards the boundary. 2 runs to be completed. Fielded brilliantly by the fielder coming on from long on. 2 gifted runs. So 2 bonus runs coming. 90 on the board. 9-0. क्या हुआ तेरे को बोल रहा था 94 for after the completion of 13 overs.
Current run is 6.92. Bai is given a 4. Sulab bowling his third over, none for 20 in his first 2 overs. Forward push, no, yes, misfield. Oh dear, oh dear. You cannot afford to do that. You'll have to restrict Dhanera to 120 if you need to chase around 130, 135. That will be a gettable target for DVO. Pratik is batting on 2, Jamesh batting on 15. Will this be an overtaking wicket? Sulab is batting. Sulab is bowling good. Goes towards third man. Boundary. Racing towards the third man. 4 runs on the board. ये लोग लेते हैं ना बीच में वो टाइम पास करते रहते हैं वो वाला फटाफट अंपायर बोलेंगे वो लेके जा पाए Good bowling, good comeback by the bowler. By Sulab. Shot towards the point. Completes a good 1 run. Nice confident looking shot towards the cover section. Jamesh batting on 20 confidently. He has got the responsibility on his shoulders. He needs to score runs in bulk. What a shot this one has been towards the covers. Towards the long off. There's a chance. The ball again goes towards third man, above the third man fielder. It races to the boundary for 4 runs. And here they reach the magical figure of 100. The score crosses 100. Now they will try to score around 150, which looks on the cards. 6 overs to go and the score goes above 100. 101 for 4. 49 runs in next 6 overs at a target of say 8 runs per over, which is possible with 6 wickets in hand, which is always a gettable score. There's a short interruption in drinks on the ground. It's quite hot and warm, humid conditions. The player in comfort zone having water. It's quite hot and humid. Bright sunshine. Now men in blue are playing brilliantly. They cross 100 on the board. They've got 6 wickets in hand. And they'll go blazing. They'll target all the bowlers. Now Sulab is on his way, who has given away 10 runs per over. None for 31 of his 3 overs. Now Kushal is back. He has taken 2 wickets. That's a good point. Will he strike on this track? Bowling beautifully. Shot racing towards the boundary. 4 runs.
What a cover drive this one was. Now, as I said time and again, that blue are striking hard. They are changing their gears. They are moving. They are changing the gears from 1, 2, 3 to number 4. Mrs. outbeaten completely neck and crop. The wicketkeeper dislodges the bail, but the umpire is unmoved. Jamish batting on 15. Pratik is batting on 7. Good decent score by Dhanir, 105 for 4. It's going to be a close contest between the bat and the ball. Glides it to a third man. It's racing down the fence. 1 run is that what they'll get. It glided it towards the third man. Kushal, right arm round, left arm round the wicket. Forward push, bowlers back. Good fielding done by Kushal. Kushal is the one who is looking for the wickets and the only trump card, the man capable of taking wickets on this ground. He is the one who can take wickets for DVO. Glides it toward the covers. Good backup by the player at the cover section. The offside is power packed with 4 fielders on the offside. 5 on the offside. There's long off, deep covers, point and third man. Four on the onside. There's deep fine leg, long on, deep square leg, and short fine leg. They run for quick single, they complete it. Now singles and twos won't do over here. You need to strike blows and blows all the way. At least a 4 and a boundary in every over if they want to reach around 150. 108 for 4 after the completion of 15 overs. There was a good partnership building up. Jamish has got the responsibility. Is batting on 25. A target of 150 will be a decent score on this ground, and DVO will have to go for the runs in first quick overs. They'll have to go for the runs in first initial overs. Devansh on his way. Missed out, and they are running for the single. Bye been declared by the umpire. Blazing sun. Sun is baked up. Glorious sunshine. Warm day in the month of January. And the temperature should be something around 29-30 degrees. Goes towards fine leg. The batsmen are running. They are coming back for the second. The fielder has to run a long way. The partnership is building up. Could be dangerous for the opponents. Good partnership done over here. Men in blue
are batting brilliantly. Swings it towards the mid wicket. They'll come back for the second. They'll decide against that. Now singles and twos won't do for the men in blue. They need to score fours and sixes to need a target of 160. Or DVO will find it in a comfort zone. They can score runs easily on this track, which is a complete batsman's paradise. It's a dot ball. Good bowling. Devansh has given away just 12 runs. This is third over in progress. He has a one more over to go. I believe that could be economical, which can restrict Daniel to 150. Good bowling again by Devansh towards the cover section. And the batsman had to really struggle hard to complete that run. After every over, the men are going for the drinks. It's quite hot. Devansh has given away just 13 runs in 3 overs. What a great bowler he's turning out to be. Now Vatsal only bowling. He has taken the wicket. Given away 17 runs. Vatsal on his long run up. Single to the offside. There's a chance of overthrow. The ball is going towards the long on section. There was no need for the throw. The fielders are upset. There was no need for the rush. Rush of blood shown by the fielding side. Men in red are giving away easy runs. Oh, catch been dropped out. Oh dear, you missed out. The bowler is upset. How can he do that? The wicket keeper has dropped the catch, and the fielder, the bowler, looks disappointed. So is the wicket keeper. He's absolutely dejected, demoralized, crestfallen, and disillusioned. How can he do that in a crunch situation like this one? The wicket at this stage could have restricted Daniel to 140. If the new batsman would have come, he would have taken his own time to settle down. Glides it towards the point section. They run for a single. Single is what they'll take. Oh dear, how can you miss out such a straight catch? Current run is 7.15. 17th over in progress. They need to score another 32 runs in next 21 balls to be back in the game. A score of 150 will be challenging score for DVO. Now it reaches, it's going towards the boundary line. The fielder will stop it. Good fielding done by the player from third man, going down towards the fine leg. So 120 on the board. Jamesh has got the responsibility. He is the one who has to go for the runs, batting on 29. Jamesh
batting splendidly, taking his own time, just observing the fielders where they are standing. As I look at the field, batting on 29. Shot toward the cover section is in 30s now. Good confidence score. Now 30 will boost up his confidence. Will he go for the 50? 20 runs short, and he has got 3 overs later on. He can do that, but he'll have to go for the slog. Vatsal, 1 wicket he has taken. Shot, which is racing towards the long off. So completion of 17 overs, 122 for 4. Jemish batting on 30, Pratik on 15. Good partnership build up. And now I hand over the commentary to the current run rate is 7.18. Vatsal, 23 runs for 1 wicket. 3 overs. Now what? Devang is coming on to bowl. Devansh, none for 13 in 3 overs. What a great bowler he has been proved out to be. Now the ball is up. Is there a player? Yes, dropped it. Oh dear, how can you do that? He was well placed, but maybe the sunshine is fielding without the glaze on. The sunshine, and he couldn't see the ball, he couldn't trace the ball, and the catch been dropped. Devansh must be upset that he was bowling very well. Just given away 14 runs in the 4th over in progress. Each bowler is supposed to bowl only 4 overs. He must be disappointed. Now this is adding insult to injury. How many times this has happened? The catch being dropped and the next ball being hit for the 4. Adding insult to the injury. $127. But not the runs. DVO must feel that that's a good reasonable score for them to chase down. Yes, this ball goes towards the boundary line. And it goes for the boundary. The fielder over there didn't anticipate. The ball goes towards the side screen. Straight shot. Down the offside for a boundary. 131. Good partnership being built up. Now Jemish is batting on 38. Again he goes for the shot. The fielder coming under it. Gone. It's a huge 6. Yes. 44. Jemish is going blazing. He has pulled up his socks. He's reaching towards the boundary. He's reaching towards his half century.
This is the 13th match of the tournament. Divansh has proved to be expensive in this over. Again, this one goes for the 4. Yes, it goes for the 4. Now, what happened in this over? Where did Divansh go wrong? He was upset. The catch was being dropped. He lost his confidence, and the run scored on and on and on. There was 6, there was a 4, and again a 4. He was disappointed after the catch being dropped. Now, Jamesh is batting on 48, 2 short of his half century. He must be upset. Now this one is swings and goes above the ground over the mid-wicket section. He completes his 50 and that's a 6. What a way to complete his half century. What a way to complete his half century. Jamesh is above 50 now. Completes 50 and a lot of cheer from the players in blue. So Jamesh has done his job. He's batting on 54 confidently. Still 2 more overs to go. And I hand over the mic to Abhishek. Will be giving the commentary for the next 2 overs. Over to Abhishek. बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज भाई, राज सर। और यहाँ पे 147 पर 4 विकेट और 18 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। काफ़ी अच्छा अंतिम ओवरों में रन आए हैं और वत्सल यहाँ पे बॉलिंग करते हुए, और एक और बड़ा हिट का प्रयास यहाँ पर, लेकिन नो मैन्स लैंड में यहाँ पे कैच, काफ़ी खूबसूरत सा कैच लिया है। ये ऐसा लगा नहीं था उनका अप्रोच देखे कि कैच ले पाएंगे, लेकिन उन्होंने कैच लिया। काफ़ी शानदार उन्होंने बॉल तक पहुंच गए। बहुत ही कौन लिया? ध्रुव मेहता ने काफ़ी खूबसूरत सा कैच लिया है। भागते भागते उन्होंने बॉल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रतीक ने काफ़ी अच्छा योगदान टीम के लिए दिया। प्रतीक आते हुए बल्लेबाज जैनम यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, और वत्सल को यहाँ पे दूसरी सफलता मिलती हुई। काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा ध्रुव मेहता ने। और यहाँ पर अगला बॉल माफ करिए, वत्सल और वहाँ वत्सल ने ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनका प्लान जो है वाइड ऑफ द क्रीज डालना, ये काफ़ी अच्छा उनका प्लान है, लेकिन यहाँ पे उनको असफलता मिली। मुझे लगता है ऐसे हालात में उनको यॉर्कर का प्रयास करना चाहिए, जो नए बैट्समैन के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। और यहाँ पर अगला गेंद डालते हैं और ये यहाँ पर 1 रन छुड़ा लिया है। 2 रन का प्रयास, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने काफ़ी अच्छा रोका। स्कोर 149 पर 5 विकेट। एक 148 रन और यहाँ पर कवर्स के ऊपर से खेलते हुए, और ये 4 रन। क्या खूबसूरत सा शॉट मारा है, जैसे कि कोई रोहित शर्मा का याद आ गया, जैसे वो कवर्स पे मारते छक्के चौके, उसी प्रकार का कुछ ये शॉट था। और टीम का स्कोर काफ़ी अच्छे सम्मानजनक स्तर पर पहुंच चुका है। 152 रन 3 विकेट, काफ़ी अच्छा इन्होंने
कमबैक किया है। 10 ओवर तक सिर्फ 60 रन थे और 10 ओवरों के बाद कुछ टीम का हालत ये है कि 10 ओवरों में उन्होंने बाकी के 10 ओवरों में उन्होंने 100 रन बना दिया है। और इस प्रकार की बैटिंग T20 में हमने अक्सर देखा है कि 6 गेंदों में 20 रन चेस होते हुए, 6 ओवरों में 100 रन होते हुए, तो T20 में बहुत मामूली सी बात है। और यहाँ पे एक और कवर्स की दिशा में खेलते हुए बट वहाँ के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण किया है और यहाँ पर 1 रन लेते हुए 154 पर कैसे वाइड होती ना थी, वाइड होती का थी डॉट का डबल डॉट था विकेट गेली पहिला बॉल हाँ वो भी अभी काउंट में डाउट है। विकेट गया अभी डॉट आया सिंगल आया 4 आया सिंगल सिंगल वाइड डाला था और यहाँ पर एक लंबा हिट और ये यहाँ पर पवेलियन में इनको वापस जाना पड़ेगा। वत्सल को एक और सफलता मिलती हुई, एक और सफलता प्राप्त करते हुए काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। 25 रन और यहाँ पर 5 रनों का पेनल्टी दिया है अंपायर ने। 5 फील्डर्स उनके बाहर थे 30 यार्ड्स के 30 सर्कल के दायरे से बाहर थे। न्यू बैट्समैन निशांत ना 30 सर्कल के दायरे से बाहर थे तो ओवर हो गया ना लास्ट ओवर है ना अभी। अरे सर ओवर का सेकंड बॉल वाइड था वो काउंट हुआ डॉट में हाँ कर दिया पेनल्टी नहीं रे पेनल्टी दे लिया था और यहाँ पे अंपायर ने पेनल्टी दिया है 5 फील्डरों को 30 गज के दायरे से बाहर रखने का। और यहाँ पर एक और रोमिल ने पहले बॉल पे काफ़ी सटीकी और कर डाला और पहले ही गेंद पे इस प्रकार की गेंदबाजी देख कर नॉन स्ट्राइकर भी सोचता होगा कि मैं क्या करूं, मुझे इस पे चांस लेना है कि नहीं लेना है। अब यहाँ पे रोमिल लेफ्ट हैंडर को करते हुए बॉलिंग 156 रनों पे 6 विकेट और आखिरी 5 गेंदे रोमिल करते हुए रोमिल ने अपना रन अप स्टार्ट किया है। और यहाँ पर काफ़ी उन्होंने जो बैट को घुमाया लेकिन डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए और यहाँ पर 1 रन लिया और इसी के साथ स्कोर 157 पर 6। रोमिल ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। लास्ट 2 बॉलों में डेथ ओवर में बॉलिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन उन्होंने आखिरी ओवरों में बॉलिंग किया और कर रहे हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी नज़दीकी मामला था, स्टंप को छूती हुई गेंद जा रही है। काफ़ी ही उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर रोमिल से देखा जा सकता है। और रोमिल ने मात्र 3 गेंदों में 2 रन, वो भी आखिरी के ओवरों में ऐसी बॉलिंग करना बहुत ही काबिले तारीफ है। और यहाँ पे एक चौका आते हुए और टीम का स्कोर 161 पर 6 विकेट। ये गेंद काफ़ी शॉर्ट हो गई, उनको आगे ही जो पहले कर रहे थे वही करना चाहिए था, आगे ही उनको पिच करना चाहिए था। और इसी के साथ स्कोर 161 पर 6 और आखिरी
दो गेंदें बची हुई है। और ये यहाँ पर मिसफील्ड होते हुए इस प्रकार का आप आखिरी ओवरों में एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इस प्रकार के मिसफील्ड का। और यहाँ पर 2 रन आसानी से ले लिया है और इसी के साथ स्कोर 163 163 फॉर 6 9.5 ओवर्स। स्ट्राइक ऑन Zemid एंड इस बिग हिट। ये यहाँ वहाँ पर फील्डर तैनात किया हुआ है और यहाँ पे मिस फील्ड फिर से और 2 रन चुरा लिया है। काफ़ी फुर्तीले दोनों बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, काफ़ी ही तेज़ी के साथ दोनों रन कंप्लीट किया। और यहाँ पर 20 ओवर पूरे हुए, 165 पर 6 विकेट और 166 रन, 166 रन टू विन। मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में। स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलते हैं। Ball is lifted, ball is back. It's rushing towards the boundary. It will reach the fence. Yes, it goes for the fence. Long on. Places it towards the third man. The ball glides towards the third man boundary for 4 runs. Now this one goes up, and that goes out of the boundary for a huge six. The player tried his a great start. Again, this is another blow. Again, it's boundary, I believe. Boundary on the square leg under control. Bowled him! Bowled him! The wicket Suken wanted, and DVO have struck. They have strike back. Now what the game? To remind you, it's 32 for 1 after the completion of 4 overs. Shot, lovely shot. It's racing towards the boundary like a bullet. What a shot! This is copybook style. Suken on his way. Now this is lifted over long off section, and it goes for the boundary. बॉलिंग करते हुए कुशल का ये चौथा गेंद, यहाँ पे फ्लाइटेड बॉल और यहाँ पे ये कैच। यहाँ पे कुशल ने लालच भरोसा था फ्लाइट देके और यहाँ पे काफी शानदार कैच। 7 for 3. Shot towards the course, placed, bisected towards the third man covers. It's racing towards the boundary. They're coming back. Goes over the mid wicket towards the fine leg. I mean to say behind the wicket keeper. It races toward the boundary. There's an appeal. Yes, the batsman walks away without seeing the umpire. Shaw missed down. Just over the fielder above the point set. Sulam is bowling good. Goes towards third man. Boundary. Racing towards the third. There's a chance. The ball again goes towards third man, above the third man fielder. It races to the boundary. Will he strike on this track? Bowling beautifully. Shot racing towards the boundary.
He must be disappointed. Now this is adding insult to injury. How many times DVO must feel that that's a good reasonable score for them to chase down. Yes, this ball goes towards the boundary line. And it Jemish is batting on 38. Again he goes for the shot. The fielder coming under it. Gone! It's a huge six. Divansh has proved to be expensive in this over. Again this one goes. Goes for the 4. Yes, it goes for the 4. No. He must be upset. Now this one is swings and goes above the ground over the mid wicket. और वत्सल यहाँ पे बॉलिंग करते हुए और एक और बड़ा हिट का प्रयास यहाँ पर, लेकिन नो मैन्स लैंड में यहाँ पे कैच, काफ़ी खूबसूरत सा कैच लिया है ये। 148 रन और यहाँ पर कवर्स के ऊपर से खेलते हुए और ये 4 और यहाँ पर एक लंबा हिट और ये यहाँ पर पवेलियन में 2 रन, वो भी आखिरी के ओवरों में ऐसी बॉलिंग करना बहुत ही काबिल तारीफ है। और यहाँ पर
Good afternoon, viewers. This is Raj Prithyani, Bright Sunshine, and DVO needs 166 to score in allotted 20 overs. Remember, each bowler is supposed to bowl only 4 overs. So this match is turning out to be interestingly. They require 8 runs per over. Romil is on the strike. Romil along with Rishi are going to back. Men in blue versus men in red. Dhanera side made 165 runs. They lost 6 wickets. Good contribution from Mehul and other players. And this is a match on. Bright sunshine, sunny day, hot and humid. Absolutely wonderful stadium. Beautiful strip and great outfield. Outfield is fast. Now DVO will have to strike. They'll have to score runs in first 4 overs to get off to a good start without losing wickets, if they need to win this game. Men in blue are pumped up. Good target set up. 166, which won't be easy for the men in red DVO. Tall buildings in front of me. Somaya Cricket Ground in Sion, famous for the outfield cricket. There have been many matches in the past. Division League. Now these are the players coming from Gujarat and the various parts of the country. The match about to resume. To remind you, 165 runs scored by men in blue. Target of 166 on the board. Anish to bowl his first over. Rishil is on the strike. Non-striker and Romil. Dhanera has scored 165 runs. Anish is on his way. So there's a slip. There's an attacking field. 5 players on the offside. Six players on the offside. 6-3 off on. 6 on the offside. So here we go, the proceeding starts. Anish, left arm, round the wicket. I believe he's bowling right arm, but round the wicket. Good length ball, no run given away. Good line and length. Tall and muscular. Swings it towards the mid wicket. It's racing towards the boundary for 4 runs. What a start given by the batsman. Now the number 10 t-shirt reminds me of Sachin Tendulkar, Shahid Afridi and Courtney Walsh. They were the players who wore 10 number t-shirt. All players have retired from international cricket. So DVO off to a great start, 4 for no loss. And Rishil opens his account with the 4. Anish on his way. Again the batsman swings it towards the mid wicket. 1 is what they'll get. Good comeback by Anish. Just 1 run given away.
Men in blue needs wickets in initial stages if they are to be in the game. And good 4 to 5 overs by men in red will take them back in the game. So it's going to be good contest between the red and the blue. Good bowling by Anish. The ball is going towards the fine leg. They are not going for the run. It's straight away down the leg side for the boundary. The outfield is fast. He flicked it towards the fine leg for the 4 boundary. A lot of runs scored in the first over. 9 on the board. Still 2 more balls to be bowled. Anish must have been disappointed. It was not a bad ball. But the batsman had some other ideas. Rushil batting on 5. Shot. Bowler's back. Brilliantly fielded by the player at the mid-off section. He saved away at least 3 runs. Good fielding by the player at mid-off. Dives, stretches out and saved 3 runs on the way. Both the batsmen playing on 5. Swings it over the mid-wicket. It goes all the way for a huge boundary over the top of the fence for 1 bounce boundary. What a flick it was! It must have been. It was a wonderful flick. Going 1 bounce for 4. 14 for no loss after the completion of first over. Just imagine 14 runs scored in the first over. Where is DVO off to? 50 runs in first 5 overs. And they could be in a comfort zone. The number 10 t-shirt reminds me of Courtney Walsh, Sachin Tendulkar and Shahid Afridi. All great players from Pakistan, West Indies, and the greatest of all, the icon, the god of cricket, Sachin Ramesh Tendulkar. Cricketing master, the master blaster, the cricketing god of cricket, Sachin Ramesh Tendulkar used to wear number 10 t-shirt, who has played 200 test matches, scored more than 18,000 ODI runs and more than 15,000 runs in test matches. Shot towards the point section for a single. Full toss on the offside. The ball could have been hit on the offside anyway, but missed out. It was a full length ball. Missed out by the batsman. Full toss on the leg side. Well fielded by the player at the mid-on section. Priyul has given away just one of his first 3 balls. Bowling beautifully. He is the bowler who is capable of taking wickets. Shot on the leg side. Gone. Flicked it away towards the mid-wicket. It's racing towards the boundary. It goes for the boundary. What a shot. Lovely shot on the leg side. Don't give batsmen the ball on the leg side. All the players are very good on the leg side.
You are asking for the punishment, and that is what he has got. "19 on the board. Don't bowl on the leg side. Batsmen nowadays are very hard. They are very harsh when you bowl anything on the upside. Again, the ball is guided towards the fine leg. "20 on the board. Priyul 6 runs of the first over. Still the last ball to come. Well bowled. Good comeback by the bowler. So the score stands 24 no loss after the completion of 2. DVO off to a very good start. 10 runs per over. The required run rate is 165 runs to be scored in 20 overs. The best part of DVO is they are yet to lose a wicket. Now DHA will believe they need to score, they need to bowl, and they need wickets at this stage. Glorious sunshine, baking heat, blazing outfield. Anish has given a 14 runs, proved expensive in his first over. Long run up. Round the wicket. Single is what they'll get. Good shot on the offside. Both the batsmen batting very confidently. Now where do Dhanir go from this stage? They'll have to strike early blow. Shot is chance given. Cash towards mid wicket. And this is the wicket what Dhanir wanted, and they have taken the wicket. So DVO loses their first wicket. 1 down for 21. Dhanir wanted the wickets and they have taken the first wicket. First wicket goes down. And what a game this one is going to turn out to be. A clear-cut game, a very close game this one is going to be. The wicket goes down. DVO lose their first wicket. Good catch by the player at the mid-wicket. Straightforward catch. And the players never miss out such kind of catches. Now Anish is being cheered up. He gave away 14 runs in his first over. He has bounced back by taking the wicket. His confidence must have been boosted. He is elevated. What an appeal, there's an appeal, there's an appeal. Not out, says the umpire. There is no DRS. The wicketkeeper looks excited. The more excitement, but the confidence was less. Calmed down by Anish. The bowler didn't appeal, but half-hearted appeal by the wicketkeeper. There's a player at deep third man. There's a short covers point. Mid off. Good bowling. Anish is bowling. Wonderful.
bowling brilliantly. I can understand the confidence must have gone sky high after taking the first wicket. A couple of quick wickets could see Danir way back in the game. And another partnership of 20-30 runs will see DVO taking the initiative. Shot on the offside. Oh dear, you missed out. Missed out the boundary. This ball could have been placed for the boundary. He had all the time to hit that shot, but missed out. There was no player backing up, only the cover section, but he missed out. On the leg side, going for single, they'll come back. They are coming back for the second run. Good runs taken. The completion of 3, it's 23 for 1. Run rate of 8. Shot, it's going towards the fine leg. There's an appeal and it's given out. Oh dear, what has happened? He went for the suicidal run. There was no way. Why did they take a chance? Never go for the run out. It's now a run out is a bonus wicket. Hello. Uh, Hello, ladies and gentlemen. एंड यहाँ पर 3 ओवरों का खेल हो चुका है. और यहाँ पर ध्रुव बैटिंग पर आते हुए अपना पहला बॉल खेलते हुए, और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से. यहाँ पे 2 विकेट गंवा बैठी है बैटिंग टीम. और प्रियुल का एक अच्छा और हमारे यहाँ पर डॉट बॉल प्रियुल ने काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ कवर ड्राइव के लिए दिया. और यहाँ पर फील्डर के हाथों में रिशेल 11 गेंदों में 15 रन, और ध्रुव 1 बॉल 1 रन. और यहाँ पे लंबा काफ़ी अच्छा करारा शॉट मारा है और बहुत अच्छा आवाज़ आया है बैट से, और बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज 6 यहाँ पर मारा है
ऋषिल ने बहुत ही उम्दा शॉट, काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा इतना लंबा और इतना बड़ा शॉट देखा है। और बॉल आउट ऑफ द पार्क। ए श्रे श्रे बॉल गेला और यहाँ पर सोहेल चौथी बॉल को घुमाते हुए चौथी और 4 बॉल और यहाँ पे काफ़ी बड़ा शॉट। और यहाँ पर एक और लंबा हिट दिया है, काफ़ी ही लंबा छक्का मारा है। इस प्रकार का शॉट मारा कि अबे नहीं बॉल यहाँ पर ही हमको दिखी, हमने हाईलाइट में। ए मिल गया ना सोहेल। यहाँ पे अगला बॉल करते हुए प्रियोल और यहाँ पर एक और यहाँ पे बैक टू बैक सिक्सेस का मुजाहरा देखने मिल रहा है ऋषिल द्वारा। और मैच में काफी जान भर दिया इन्होंने, ये काफी महंगा ओवर साबित होते हुए। कंटिन्यू 2 छक्के और आखिरी गेंद बची हुई है। यहाँ पर प्रियोल दबाव में नजर आते हुए और यहाँ पर ये आखिरी गेंद प्रियोल का। और यहाँ पर कवर्स की दिशा में खेलते हुए यहाँ पे अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए और यहाँ पर प्रियोल का ओवर समाप्त। ये ओवर में काफ़ी बड़ा ओवर, यहाँ पे 14 रनों का ओवर और उसी के साथ एक विकेट की भी प्राप्ति की। और यहाँ पर हमको बदलाव देखने मिल रहा है बॉलिंग में, सम चेंजेस। और यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर लग रहे हैं हमको ये देवांश, काफ़ी यंग और काफ़ी फुर्तीले और काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। देखते हैं उनका क्या देवांश का अप्रोच रहता है ध्रुव के अगेंस्ट। यहाँ पे लेग स्पिन करते हुए, जो क्रिकेट में सबसे डिफिकल्ट आर्ट है लेग स्पिन करना। और यहाँ पर ये काफ़ी खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर उन्होंने डाला। और यहाँ पर देवांश ने सिर्फ बॉल छोड़ा, बॉल में एनर्जी नहीं था। और एक और चौका 41 रनों पे 2 विकेट, 4 ओवर का खेल हो चुका है और एक बॉल देवांश ने किया है। और पहले ही बॉल पे चौका मार दिया है, ध्रुव ने उनका चौके से स्वागत किया है। और ये दूसरा बॉल करते हुए और यहाँ पर एक और बढ़िया शॉट और ये 6, एक और शानदार छक्का। यहाँ पर 2 गेंदों में 10 रन आते हुए। और देवांश अभी नए हैं, उनको इतना गेम का समझ नहीं है, उनको कैप्टन को जाके उनसे बात करनी चाहिए और उनको थोड़ा उनका हौसला बुलंद करना कैप्टन का काम है, टीम का काम है। और यहाँ पर एक और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन कोई बात नहीं, 1 रन, 3 गेंदों में 11 रन। और यहाँ पर मैच काफ़ी रोमांचित होता हुआ। और यहाँ पर देवांश लेग स्पिन काफ़ी डिफ़िकल्ट आर्ट है, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर बॉल को कंट्रोल करना, बॉल को टर्न कराना हर कोई नहीं कर पाता, इसमें सालों साल का मेहनत लगता है ऐसे बॉलिंग के लिए। और एक और लो फुल टॉस और ये आउट ऑफ द पार्क। इस प्रकार से मैच देवांश
लेग स्पिनर दो टाइप का होता है। लेग स्पिन जिस दिन चला वो अकेले दम पे मैच जिता देगा या फिर अकेले दम पे मैच बेच देगा, गवा देगा। वही चल रहा है यहाँ पर। मैच लेग स्पिनर बेच रहा है, गवा रहा है। और देवांश पर क्या गुजरता होगा वो देवांश ही समझ सकते हैं। और यहाँ पर देवांश अगली गेंद करते हुए बेचारे काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने अपना एंगल चेंज करते हुए, और ये काफ़ी बढ़िया बॉल, इस प्रकार की बॉलों की ज़रूरत है यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा टप्पा बैकअप दी लेते यहाँ पर। वो उनको बड़े टर्न की आवश्यकता नहीं है, बड़ा टर्न नहीं कर सकते वो। बड़ा टर्न काफ़ी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा बदलाव अपने लाइन में किया। इसी प्रकार की बॉलों की ज़रूरत है। टप्पा मिलने में उनको टाइम लगा, रिदम आने में टाइम लगा, लेकिन फाइनली वो बैक टू द रिदम एंड अच्छा फिनिश किया आफ्टर बिग। भाई किधर जा रहे रे वो? 5 ओवर 56 रन, 2 विकेट। बॉलर प्रतीक। वही है, वही है। और आखिरी 2 ओवर में काफ़ी रन आ चुके हैं, जिससे अभी टीम काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच गई है। और इसी प्रकार के ओवरों की ज़रूरत है यहाँ पर बैटिंग टीम को। अपना ओवर लेकर आते हुए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा शॉट और एक और चौका है यहाँ पर। काफ़ी शानदार शॉट, काफ़ी उम्दा शॉट। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर। और यहाँ पर एक और रन लेते हुए काफ़ी सूझबूझ और समझदारी भरी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर रशील और उनके पार्टनर। मारेंगे दोनों है, 88 में 105 चाहिए। जीतने को क्या और एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिफेंस
यहाँ पर एक और बहुत ही शानदार सिंगल लेते हुए यहाँ पर ये समझदारी भरा बैटिंग कर रहे हैं। बड़े ओवरों के बाद अपने सिंगल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। उनको पता है जितने बड़े शॉट इम्पोर्टेंट है उतना स्ट्राइक रोटेट होना और उतना ही इम्पोर्टेंट है सिंगल्स लेना। सो दे both are happy and team is very happy and focus on next ball and huge six. What a slap! It was the fabulous hit out of the park. नेक्स्ट लेवल बैटिंग। इस प्रकार की बैटिंग देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैच 16-17 ओवर में ही ख़त्म हो जाएगा और विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है रशील को। यहाँ पे पानी की मांग की है और क्यों ना करे, इतना लंबा जो छक्का मारा है करना भी चाहिए। वापस से यहाँ पे रशील काफ़ी अच्छा और यहाँ पर और ये हवे पे गेंद और एक काफी बढ़िया सा चकमा दिया। बॉलर ने एक चांस बना था लेकिन इकहत्तर रन 2 विकेट 8 ओवर काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिचुएशन में। और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक करते हुए जिमिस बॉलिंग पर आते हुए और यहाँ पर रशील काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाते हुए बेरहमों की तरह मार रहे हैं। और यहाँ पर जिमिस बॉलिंग के लिए आए हैं। ध्रुव यहाँ पर अगला बॉल करते हुए और एक काफ़ी अच्छा बॉल 1 रन के लिए ढकेल दिया है। 71 रन 2 विकेट। अब स्ट्राइक रसील के पास ये देखने जैसा होगा रसील कैसे खेलते हैं जिमिस को, क्योंकि रसील अभी काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने 19 गेंदों में 43 रन, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, बहुत ही एग्रेसिव बल्लेबाजी की है। तो
देखने जैसा होगा ऋषिल और जिमित का कंपटीशन, हाउ दे कैन डील विथ देम। लेट्स वी गो। और यहाँ पे ये तो अलग ही लेवल का शॉट था, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सेफ कवर्स के ऊपर से मार दिया। ऋषिल को अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गेंदबाजों को एकदम आसानी से खेल रहे हैं, जैसे कि नॉकिंग कर रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ मार रहे हैं, और इसी प्रकार से टीम जीती जा सकती है। 73 रन पे 2 विकेट, 6 ओवर 2 बॉल। और यहाँ पर एक और जिमीज की, और यहाँ पे डेलिकेट कट करते हुए, सहलाते हुए यहाँ पे सहला दिया है। यहाँ पे आक्रामक सोच के साथ यहाँ पर उन्होंने सहला दिया है, एक नाजुक भरा शॉट जिसको कहते हैं, नाजुकता के साथ डेली कट कर दिया है। बहुत ही शानदार शॉट। ध्रुव आते हुए, और यहाँ पे एक और बढ़िया सा गेंद, काफ़ी स्किट करके निकला, ज़ोर से निकला। ध्रुव भी बहुत बखूबी के साथ ऋषिल का साथ निभाते हुए, और ये पार्टनरशिप ऐसा लग रहा है मैच जिता ही देगा, और काफ़ी अच्छे सिचुएशन में, परिस्थिति में ला के रखा है बैटिंग टीम को। और यहाँ पे जिमेज, और ये काफ़ी अच्छा डिफेंस और काफ़ी बढ़िया गेंद उन्होंने किया है, सॉलिड डिफेंस इसे कहते हैं। और बॉल भी उसी प्रकार का था कि बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। और यहाँ पे ये 1 रन लेते हुए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे उनके टीम साथी उनका मज़ा लेते हुए कि मारिए आप, आपको सब देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया आपको यूट्यूब पे देख रहा है, आनंद लीजिए, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके माँ बाप सब आपको देख रहे हैं, इस लम्हे का मज़ा उठाइए। और बॉलिंग के लिए जश आए हैं, जश जश बॉलिंग के लिए जश आए हैं, और देखते हैं जश किस प्रकार का बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अभी परिस्थिति काफ़ी हद तक बल्लेबाजों के पक्ष में है। यहाँ पर पवेलियन काफ़ी खुश नज़र आता हुआ बैटिंग साइड का, लेकिन उनको याद रखना चाहिए T20 गेम है, कभी भी रुख पलट सकता है, तो उनको हमेशा मैच में इन्वॉल्व रहना चाहिए, एवरी बॉल, हर गेंद। और यहाँ पे अगला गेंद लेकर आते हैं, और ये काफ़ी अच्छी फ्लाइटेड गेंद, और यहाँ पर 1 रन लेते हुए स्पिनरों को, ऐसे फ्लाइटेड बॉलर को मारना काफ़ी दिक्कत है, तो यहाँ पे कप्तान का सही सोच कि स्लो बॉलर को दे के विकेट लेने जाएंगे वो।
पूजा पूजा बॉलिंग। पब्लिक वैसा हो गया बट गेम क्या बोलता है, टीम का परचेस मारेगा तो अपना बजेगा, कुछ होएगा, टीम का 100 मारेगा तो अपना 100 अनाउंस होता है, ऐसा होता है। और यहाँ पर एक डॉट गेंद और यहाँ पे एक आउट, बड़ा सा, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डिसमिसल। ये बहुत बड़ा विकेट, ध्रुव काफ़ी अच्छे लय में लग रहे थे और यहाँ पे ध्रुव ने अपना विकेट गंवा दिया। कीपर ने काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन हमको ध्रुव की दाद देनी पड़ी। काफ़ी अच्छी परिस्थिति में अपने टीम को ला के रखा है और ध्रुव काफ़ी अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा। और उनको सब क्लैपिंग और उनका सब स्वागत स्वागत करते हुए, उनका मनोबल ऊपर करते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत ही उम्दा पारी खेला है। और जिस प्रकार उन्होंने बैटिंग की है, ये सराहने की बात है। हम सब बहुत खुश हैं उनकी बैटिंग से और हम उम्मीद करते हैं वैसे और इनिंग खेलेंगे इन फ्यूचर। और यहाँ पे इसीलिए कप्तान ने भेजा था कि साझेदारी को तोड़ा जाए और वो उसमें कामयाब रहे कप्तान। बहुत ही बढ़िया कप्तानी, बहुत ही अच्छी कैप्टनसी यहाँ पे करते हुए। और यहाँ पर ऋषि है, हाँ ऋषि भी मार रहा है, ये भी मार रहा था। कौन है बैट्समैन, कौन है? मानो है, मानो मानो मानो। यहाँ पे मानव, जो उनको अभी रुक जा भाई, अभी रुक जा, 3 बॉल बाकी है, दिखाना होगा 3 बॉल। कि मैं उस टाइप का मानव हूँ जो मैच जिताने का मादा रखता हूँ। और यहाँ पर 1 रन लेते हुए काफ़ी दोनों टीमें बहुत अब लड़ रही है, जूझ रही है मैच जीतने के लिए। कौन मैच जीतेगा कौन नहीं, ये तो अब रशील काफ़ी हद तक रशील पे निर्भर है। और रशील काफ़ी जिम्मेदारी के साथ अकेले वहाँ पे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं एक वॉरियर की तरह अपने टीम के लिए। एंड वो अपनी टीम को जिताकर आएंगे, ऐसा उन्होंने प्रण लिया है। और एक और फ्लाइटेड बढ़िया गेंद और उससे भी शानदार एक डिफेंस। ओवर समाप्त होते हुए 82 पे 3 विकेट, 8 ओवर। कंटिन्यू करते हुए ओवर को यहाँ पर काफ़ी सॉलिड डिफेंस यहाँ पर करते हुए 1 रन लेते हुए यहाँ पर बैट्समैन। और यहाँ पर मानव बैटिंग करते हुए डॉट बॉल
सिंगल्स आने बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैच ठहर जाता है, रुक जाता है और बैटिंग पे सब पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो मानो को स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। तू बता तेरा मैच किधर है? और यहाँ पर एक और सिंगल लेते हुए टीम 84 रनों पर 3 विकेट। रशील काफ़ी जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए रशील का बहुत ही अहम यो रोल होगा इस पूरे इनिंग में। और अभी उनको भी पता है कि बहुत कुछ करना बाकी है मैच में, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमको हार्दिक पांड्या की याद दिलाते हुए बॉलर जिस प्रकार से उन्होंने अपने सर पर बैंड बांधा है, हार्दिक पांड्या की याद आ गई। बस उनके बाल छोटे थे, इनके बाल बड़े हैं, तो हार्दिक धोनी दोनों मिक्स है। और यहाँ पर भाई देख टाइम ओपिनियन। यहाँ पर हमारे जो अगले और यहाँ पे काफ़ी शानदार डॉट बॉल करते हुए मानो को ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रशील को दे, वो सिंगल्स पर ज़्यादा काम करे। रशील के पास तो बड़े हिट भी लगा सकते हैं और इस प्रकार अगर बैटिंग करते रहेंगे तो रशील के ऊपर भी दबाव आते रहेगा, तो उनको स्ट्राइक रोटेट पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये यहाँ पर एक और डॉट बॉल, यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बैट और बॉल का सिर्फ कनेक्शन हो जाए। 85. 9 over 85.3 and Rishil Mano on the pitch. It's very interesting how they build this inning and take responsibility to win this match. Especially on everyone focus on Rishil. He's doing really very well. But game is not over. So Rishil on strike. जश लास्ट ओवर उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी और ये फ्लाइटेड बॉल। और यहाँ पे रिशेल बहुत ही मेच्योर उनके इनिंग में नज़र आ रही है, उनके बल्लेबाजी उनके बैटिंग में बहुत मेच्योरिटी नज़र आ रही है। जिस प्रकार से वो सिंगल्स ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, वही काम मानव को भी करना है। बट मानव अभी अलग ही उनको स्कोर बोर्ड की तरफ देखना चाहिए कि क्या टीम को उसका सिचुएशन है। और यहाँ पर मानव को स्कोर बोर्ड और सिचुएशन देखना चाहिए, उनको बैट और बॉल पे कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे पवेलियन से प्रेशर आते हुए, और उनका भी सही है, दे ऑल्सो सेड राइट, क्योंकि सिंगल्स आना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रन रेट अगर बढ़ता रहेगा, रिक्वायर्ड रन रेट, तो बैटिंग टीम और रिशल पे काफ़ी दबाव आ जाएगा और ऐसे प्रेशर में अक्सर सेट बैट्समैन अपना विकेट दे बैठता है। ये काफ़ी अच्छा मानव द्वारा अप्रोच देखा गया। ही इज़ रियली डूइंग वेरी वेल और यही उनका रोल है, यही उनका किरदार है, उनको यही रोल प्ले करना है। और यहाँ पर एक और
बढ़िया बॉल। रश रिशिल इस प्रकार के बैट्समैन हैं कि वो 5 ओवरों के में भी गेम ख़त्म कर सकते, तो उन पे दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके बाद वैसा हार्ड हिटर कोई नहीं। और यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया कॉल। और मुझे नहीं लगता ऐसे सिंगल्स, ऐसे 1 रनों के लिए अपनी विकेट, कीमती विकेट गंवाने की ज़रूरत है। और अगला बॉल यहाँ पे, ये फ्लाइटेड बॉल, और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सहलाते हुए थर्ड मैन की दिशा में वहाँ पर शॉर्ट थर्ड रखा है, और वहाँ पे वो ड्रिंक्स वाटर। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, सी यू सून। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बनस कप, बनस कप 2024 हमारे कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतने ब्यूटीफुल ग्राउंड, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत से ग्राउंड पे ये मैच को ऑर्गेनाइज़ किया, सोमैया, और अपना सहयोग दिया। इस इस प्रकार के टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए हमें एक कमेटी की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, और उसमें लोगों ने हमें सहयोग किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निखिल शाह, कुमार मेहता, मिलन मेहता, हितेश शाह, मनीष पारिक, सौरभ जावेरी, पारस रोलिया, जस सिरोया। थैंक यू सो मच। आपके कंट्रीब्यूशन, आपके ये बनस बनस कप आपने हर साल ऑर्गेनाइज़ किया है। हम उम्मीद करते हैं आप हज़ारों साल तक ये टूर्नामेंट ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करोगे। बोर हो गया इन लोग का मैच भी देखने लग गए। स्टार्टिंग में बाद में थोड़ा मजा आया। भागते इसमें वाला जैसे मतलब छोटा बाबू भाई, थोड़ा मोड़ा चलना रहेगा साथ में तो भागना पड़ेगा।
लेते हुए। दो बॉल मिसिंग है, एक रन मिस नहीं था, दूसरी गेंद पे वन मिसिंग है। 90 हुआ ना। और ये लंबा हिट और ये बाहर। जब तक इस गेम में रशील है, एक गेम जिंदा है और ये गेम बैटिंग साइड ही जीतने का पूरा चांसेस। किसका फाउल था? मैंने किया था मेरे फ्रेंड को। अच्छा। हेलो, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर एक लंबा छक्का देखने मिला हमको और एक काफ़ी बड़ा रशील द्वारा ये हिट देखने मिला और एक और अच्छा कनेक्शन उतना बेटर नहीं हुआ, लेकिन ये 2 रनों के लिए जाएंगे और यहाँ पर ये 2 रन ले लिया है। माफ़ करिए, 1 रन ही लिया है। रशील मानो का रोल बस इतना है कि उनको रशील को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देना है, स्ट्राइक रोटेट करना है, सिंगल्स देना है। और यहाँ पर मानो के पास स्ट्राइक और मानो, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही समझदारी भरी बैटिंग। और यहाँ पर प्लेयर इंजर्ड होते हुए, यहाँ पे मानो को काफ़ी जोर का लगा है, काफ़ी काफ़ी सीरियस इंजरी नज़र आ रही है। हमको देखना पड़ेगा उनको क्या हुआ है। टिल मिलते हैं थोड़ी देर में, टिल दी एंड। और यहाँ पर ये एक और बढ़िया, थोड़ी देर गेंद हवा में थी और यहाँ पर और ये एक और बॉल है, बच्चे लीड में 11 ओवर में। बॉलर्स चेंज किया है यहाँ पर। यहाँ पर जश को लाया गया है, जश जो विकेट टेकर बॉलर है। और ये देखने जैसा होगा कि रशील उनको कैसे खेलते, क्योंकि वो काफ़ी फ्लाइटेड और स्लो एयर में डालते हैं बॉलिंग, और इस प्रकार के बॉलर को हिट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पावर नहीं, ऐसे बैट्समैन को आप पावर से नहीं मार सकते, क्योंकि पावर अगर लग भी गया तो फील्डर की गोद में जाके बॉल बैठ जाता है। लेट्स सी क्या होता है। और ये जश डालते हुए और एक बहुत ही फ्लाइटेड, यहाँ पे बड़ा झटका लगते हुए, बहुत ही बड़ा, और इसी के लिए जस को बुलाया गया था। यहाँ पर बहुत ही दिक्कत में बैटिंग टीम, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, और जो विकेट उनको चाहिए था, जो विकेट के लिए जस को भेजा गया था, वही विकेट उन्होंने रशील को आउट कर दिया। वेल प्लेड रशील, आपने बहुत ही अच्छा खेला। काश आप सीधा खेलते तो आप आउट नहीं होते, आप जस को चांस ना लेके किसी और बॉलर को चांस लेते तो आज आप क्रीज पे मौजूद होते और इस मैच को आप अपने बल्ले से जिताते। कोई बात नहीं, हमारे आगे आने वाले बल्लेबाज हैं, वो ज़रूर करेंगे। आर्यन आर्यन आर्या यहाँ
पे आर्या आते हुए, आर्या अपना कार्य अच्छे से करेंगे। यहाँ पे देखने जैसा होगा कि उनका अप्रोच, उनकी बैटिंग कैसी है, उनके स्टांस। अभी उन्होंने गार्ड लिया और जश ने काफ़ी अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी की है। मात्र 7 रन देके 2 विकेट लिया है 2 ओवरों में और 1 बॉल, और वो भी सबसे बड़ा विकेट उन्होंने रशील का लिया है, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे थे। और यहाँ पर ये काफ़ी काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी। जिस प्रकार की उन्होंने गेंदबाजी की है, और एक और बढ़िया सा कवर ड्राइव, और फील्डर के हाथों में 3 गेंदें हो चुकी है। और एक और यहाँ पर लंबा छक्का, और ये बच गया। छक्का नहीं, माफ करिए, जिस प्रकार ने उन्होंने हिट किया मुझे लगा छक्का है, लेकिन वो छक्का नहीं, वो फील्डर के हाथ में था, सिंगल था। और यहाँ पर करंट रेट 8.65 का है, और यहाँ पे एक और कट शॉट, नाइस। और यहाँ पे 1 रन लेते हुए, और ये जश का आखिरी बॉल, और देखते हैं आखिरी बॉल किस तरह से समाप्त करते हैं। और यहाँ पे ये टॉपी लगते हुए और एक और झटका लगते हुए जश ने। यहाँ पे हम वेलकम करते हैं राज भाई का, जो हमारे इंग्लिश कमेंटेटर है। वेलकम राज भाई, वी आर वेटिंग योर कमेंट्री, सो एनर्जेटिक। Thank you, Abhishek. So, Dhanir back in the game. They've got a strong hold in the game now. Five down. They've lost quick blows. 102 for 5. And this match is slowly and steadily moving towards Dhanir. Couple of quick wickets. The batsman in form is out. And now they lose another wicket. So they are under pressure. Number 7 batsman going down to bat. So the top order goes back to the pavilion. 12 overs gone. The current run rate is 8.50. Manav is batting on 6. Gone. Manav got out. Arya is batting on 2. Jash. 3 wickets for just 10 runs. He has shown his Jash way. Hundred and two for 5. Twelve overs gone. Josh has taken 3 wickets for 10 runs in 3 overs. DVO needs 64 runs in 48 balls with 5 wickets in hand. This match is interestingly poised. Now, what DVO has to do? They have to build up a good partnership of at least 20-30 runs to steady the ship and to be back in the game. Now, I believe Dhanira have got a strong hold. So, anything can happen. Cricket is a game of glorious uncertainties, but the upper hand, Dhanira have got the upper hand. Priyul, who has been expensive, has given away 31 runs in 3 overs, is back to bowl. Is on his way. 31 runs in 3 overs. Guides it towards the third man. It's a dead ball. The
The batsman was not ready. Now we can see a strong offside field. There's a third man point, deep covers, there's long off. Now it's a mid off. Good bowling. There's an appeal. Not out, says the umpire. No hesitation by the umpire. It didn't even move. Guides it towards the cover section, sliding it towards the third man. They're racing now, they'll run back. No, they decide against that. Wise decision taken by the batsman. The batsmen are steadying the ship. They got enough overs. They need 63 runs in 46 ball. They have to steady the ship. Now the next ball is pushed towards mid wicket. Gone down the track. It moves towards the offside. Single is what they'll get. Was a good shot. Copybook cover drive. Suken is a new batsman batting on one. He bowled good line and length when he was bowling. Shot. It's the ball is racing towards the mid-on section. Mistimed the shot. He couldn't connect the ball. Didn't connect the ball in a nice way. Only a single given away. Now this one goes towards the fine leg. There's a fielder at fine leg, only a single given away. Glorious sunshine, bright sunny day. Sun is baked out. A breeze is blowing. It is helping the bowlers. 5 wickets down. It's anyone's game from now. A good partnership of couple of wickets. A good partnership of couple of good wickets can change the game in either way. DHANERA needs wickets and DVO needs a partnership of 20-30 runs. Both the batsmen are new at the crease. Arya is batting on 5, Suken is batting on 2. It will take time for them to settle down. Josh, who is the strike bowler, taken down 3 wickets. We'll see the fire in his 4th over. He is the most important bowler for DHA. Guides it towards third man. Run for a single. There's a slip around. Close catching position. Swings it towards square leg. Now they won't take chances of Josh bowling because he's bowling brilliantly. He's a wicket-taking bowler. Cuts down, slides down towards third man. Single is what they'll get. Men in blue are fighting hard. They have got the upper hand. Goes above the deep mid-on section, fielded at long on. Now they need 4s and 6s to bounce back in the game. DVO. But they cannot take chance against Josh, who has taken 3 wickets. Shot! It's racing towards the cover section. Only a single. They are not taking chances.
14th over in progress. The last ball of the over, just 4 overs. The last ball of his spell. Now this one has been shot over mid-wicket for a single. End of the over, the score stands 112 for 5 after the completion of 14 overs. So 14 overs gone, 113 for 5. So good match going on. Great match. It will be a close match. Could be the match of the tournament. Good bowling by Anish, who has taken wicket of giving away 12 runs. Third over in progress. There's an attacking field on the offside. Deep third man. Guides it toward the covers. Single is what they'll get. Danir, they are batting, they are bowling brilliantly. Good fielding done by them. They are fielding smartly. Runs not given away by Danir. And DVO has to strike. They'll have to go for the slog. Just 6 overs remaining. Singles and twos won't do for DVO. They'll come under pressure when they'll be playing the last penultimate overs. The last and the last over and the penultimate over.
Current run rate is 7.93. Good bowling, dot ball. They need 51 runs in 33 balls, still possible, but they'll have to strike blows, at least fours and sixes. They need to score runs, they'll have to target 1 over. There's an appeal. Good bowling. Straight bowling is bowling with line and length, accurate bowling. Anish is bowling beautifully. Good line and length, accurate. Is bowling a wonderful spell. The target is now building up. The batting side is under pressure. Single is what they'll get. 51 runs needed in next 30 balls. 5 overs remaining. At the run rate of 10 runs per over. It's not easy to score runs. The batsman number 7 is at the striker end. Then you follow it with the lower order batsman. Arya is batting on 9. Suken is batting on 7. Now, what DVO requires? They'll have to score at least 15-20 runs in the next over. They'll have to target one of the bowlers. Abhishek will continue with his commentary, who is giving good commentary in Hindi. Share up for him. He'll improve in his life in his commentary section. So over to Abhishek. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और यहाँ पर ये गेंद हवे में और यहाँ पे एक रन। मैच काफ़ी रोमांच से भरा हुआ। 29 बॉलों में 48 रनों की ज़रूरत है। यहाँ पर देखने जैसा होगा कैसे करते ये। और यहाँ पे एक और रन ले लिया है। और यहाँ पे एक और डॉट गेंद, और ये डॉट गेंदे हार के करीब लेकर जाते हुए, हार के और करीब ले जाते हुए 26 बॉलों में 47 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर। और यहाँ पर और यहाँ पर 16 ओवर 123 रन 5 विकेट।
एक ओवर पे जाओगे तो हो गया तो और यहाँ पर जेमिस थर्ड ओवर करते हुए जिमिस है स्पिनर है क्या सब अभी पेसर है ध्रुव और यहाँ पर एक रन लेते हुए 16.1 124 रनों की आवश्यकता। और यहाँ पर एक रन लेते हुए बोल्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा यॉर्क, बहुत बढ़िया बॉलिंग किया यहाँ पर। सुलभ और यहाँ पे सुलभ आउट होते हुए, सुलभ आउट नहीं हुआ भाई अभी आया सुलभ सॉरी माफ़ करिए, सुलभ आते हुए बैटिंग को। और यहाँ पर 125 रन 5 विकेट 19 ओवर, माफ़ करिए 16 ओवर 3 बॉल। और मैच काफ़ी हाथ से निकलता हुआ। यहाँ पे कोई चमत्कार ही उनको जिता सकता है। एक बॉल भी नहीं खेला रहा ये ओवर ओनली बस ये पानी है हर ओवर में पानी। अरे हर ओवर में अभी इतनी बैट्समैन अभी गए तीन ही बॉल खेलेगा पानी लेके आए बोले बैट्समैन गुड मारता है पानी से छोटा है एक और यहाँ पर ये बॉल बाउंस करते हुए दो रन है 1/2 6 विकेट हाँ हाँ यहाँ पर फटाफट 20 बॉल डाल दे नहीं चाहिए नहीं चाहिए पूरा कर आखिरी गेंदों पे मैच एक औपचारिकता रह गया है। ए सुहेल हेलमेट लेके आने का हेलमेट ये अभी गली में बैठेगा बैठ भी गया नहीं नहीं वो तो कीपर है ये वाइड बॉल होते हैं और यहाँ पर आउट हो गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कॉल दिया, निकल गए। एक और विकेट का पतंग होते हुए यहाँ पर 16 ओवर होते हुए 127 रन। और यहाँ पर
विकेट का पतन। आउट कौन हुआ? आर्यन आर्यन रन आउट होते हुए। इसमें ना आर्यन की गलती है ना स्ट्राइकर की गलती है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। रिप्ले में भी देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कॉल दिया और जैसे ही बॉल डॉट हुआ उनको रन के लिए जाना था, वो कैसे जाते। स्ट्राइक पे कौन है? सुलभ ना? सुलभ ही है। लास्ट बॉल 28 हुआ ना? 3 विकेट रखो। यहाँ पे एक और विकेट जाते हुए। कीपर तो वो है ना? यहाँ पे राज भाई वापस आते हुए। What a suicidal run out. Why are they going? Why are they making a mistake? Run out after run out. How many run outs have there been in DVO innings? You cannot win matches by going for run outs. 17 ओवर 130 8 विकेट। Now, what a blunder DVO has done. So many run outs. ये इम्पैक्ट प्लेयर किसके जगह है? Now, you can see on the replay, the batsman is out of the crease by miles and miles. नहीं नहीं, बट इम्पैक्ट प्लेयर है वो। हाँ, किसकी जगह पे है वो? Both the batsmen now will have to score runs. Sulab is batting on no score of 2 balls, and Divanch has yet to open his account. Current run rate is 7.60, which is of no use at this stage now. When you see when they've lost 7 wickets and the number 9 batsman is on the crease. So run rate doesn't matter. The batsmen have to follow. Now the miracle can save DVO. Jamesh 1 for 13 in 2.5 overs. What a shot this one is towards the square leg station. Short sweep or shot, you can say pulled. It's a mixture of both pull and sweep. 2 runs on the board. Now they move on to 132. Sulab is batting strongly on 4. He's the one who'll have to go for the blows. Just legal 23 deliveries remaining, and they need a strike rate of 200 runs. There goes the shot. There's a player come. Oh my dear, there goes in simple catch and deep covers. Goes down the wicket number 8. Was a good shot, but couldn't clean the cover section. कैच कौन लिया? Now DVO believes they are nowhere in the game. Only the miracles can save the game. They lose their 8th wicket. There were certain runouts, suicidal runouts. That was the mistake. The game was going on closely in both the hands, both this way, both either side. But Red were under pressure. When the score rate, the target was going up, up and up. They lost wickets at regular intervals. That was not required.
Runouts been runouts were done. Good fielding by Danir. They fielded brilliantly, and you can see the result. Full toss on the leg side. Strong. He turns toward mid wickets. Now what they'll do? Will they invite for another run out, which they have done in the past? रन आउट अभी वहाँ पे ये सब मत बताओ क्या बताओ बस Good dot ball. So Dhani is slowly and steadily progressing towards victory. 132 on the board. 18th over in progress. 133 on the cards. Guides it towards the fine leg. Westfield fumbles, but that is of no use for the DVO side. Just single given away. Nishil Shah is batting on 1, Vatsal on 2. Anish has taken 2 wickets for 25 overs. Now Jamesh will bowl his 4th and final over. He has taken 1 wicket for 15 runs. It's a disappointment for DVO. The match was under control, but they lost wickets at regular interval. Jamesh with long hair, muscular body, good physique, on his way. Now Vatsal is going for the strike, for the blows. He will blow away the ball in either direction. Looks a bit frustrated that the batsman on the front side, the top order and middle order couldn't score the runs. Fielded brilliantly by the bowler's back, by the bowler at the striker's end. Do you expect a miracle? 31 runs in 11 balls, which is possible in T20s, but just the last wicket in hand. Can the game change around? Or this way nothing will happen for the DVO. Down the leg side for a wide.
towards the mid wicket, racing towards the boundary. Couple of runs taken away. 2 is what they'll get. Can we see some entertainment from batsmen number 10 and 11? If they go for 4s and 6s, they can delight the crowd, the small crowd which has gathered over here, cheered up by the players. There it goes. One shot towards the player at long off. Shot towards the cover section. The offside is very strong with 5 players on the offside, and the bowler is bowling to his plan. Reminds me of Glenn McGrath, who used to bowl line and length of with the very accurate line and length. He never used to bowl no balls on the offside. Same thing reminds me of Nathan Lyon of Australia, the great spinner who has bowled 22,000 balls without conceding a single no ball. So 19 gone, 141 for 9. $25 needed of 6 delivery. Bowled him. The match comes to an DVO is lost. DVO is lost. Bowled out. Clean win for Danir. They win by a convincing margin. So Men in Red wins the game. Congratulations to Danir. They have done a brilliant job. Excellent victory for them. And here we come to the end the match with my commentator Abhishek. So we'll continue our postcast after some days. So it's end of the match. Thank you very much. And have a nice day. Good bowling by Anish. The ball is going towards the fine leg. They are not going for the run. It's straight away down the leg side. Swings it over the mid wicket. It goes all the way. For he is the bowler who is capable of taking wickets. Shot on the leg side.
Gone. Flicked it away towards the mid wicket. It's racing towards the boundary. It goes for the shot. Is chance given. Cash towards mid wicket. Shot. It's going towards the fine leg. There's an appeal and it's given out. Oh dear, what has happened? 11 गेंदों में 15 रन और ध्रुव एक बॉल एक रन और यहाँ पे लंबा काफी अच्छा करारा शॉट मारा है और बहुत अच्छा आवाज आया है बैट से और यहाँ पर एक और यहाँ पे बैक टू बैक लेग स्पिन करते हुए जो क्रिकेट में सबसे डिफिकल्ट आर्ट है लेग स्पिन करना और यहाँ पर ये काफी कर दिया है ध्रुव ने उनका चौके से स्वागत किया है और ये दूसरा बॉल करते हुए और यहाँ पर एक और बढ़िया शॉट और ये करना हर कोई नहीं कर पाता इसमें सालों साल का मेहनत लगता है ऐसे बॉलिंग के लिए और एक और लो फुल टॉस और ये आउट ऑफ द पार्क अपना ओवर लेकर आते हुए और यहाँ पर काफी अच्छा शॉट और एक और चौका है यहाँ पर तो they both are happy and team is very happy and focus on next ball and huge six what a slap it was the 73 रन पे 2 विकेट 6 ओवर 2 बॉल और यहाँ पर एक और जिमीज की और यहाँ पे डेलिकेट कट करते हुए सहलाते हुए और यहाँ पर एक डॉट गेंद और यहाँ पे एक आउट बड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा और ये लंबा हिट और ये बाहर जब तक और ये जस्ट डालते हुए और एक बहुत ही फ्लाइटेड यहाँ पे बड़ा झटका और यहाँ पे ये टॉपी लगते हुए और एक और झटका लगते हुए जस्ट ने यहाँ पे हम वेलकम करते हैं बोल्ड यहाँ पे काफी अच्छा ये वाइड बॉल होते हैं और यहाँ पर आउट हो गए हैं यहाँ पर इस प्रकार का कॉल दिया निकल गया यहाँ पे एक और विकेट जाते हुए And they need a strike rate of 200 runs. There goes the shot. There's a player come. Oh my dear, there goes in simple catch and deep covers. Bowled him. The match comes to an DVO is lost. DVO is lost.